A wife is celebrated, a woman is celebrated when she's of age if she's happy with her husband. She looks good standing next to her husband. And that relationship, that house is happy, is peaceful if the husband is happy with the wife and the wife is happy with the husband. And we're going to look at that rishta between us and Vaheguru ji. If you look at the relationship of a friend, आजकल दी जेरी फ्रेंडशिप हुंदी है इट्स मच मोर मतलबी है ना कि अपने ही सुख से सब लागे क्या दारा क्या मी वही रिश्ता हो गया वो एक फ्रेंडशिप नहीं दिस इज अ सौदाशिप where you make some kind of deal, you make me happy, I make you happy. So इत्थे सवाल होंदा है सब राती सुहागणी असी सुहागण किदां बनी है. So this is how when we read Gurbani, इस तरह के सवाल पूछे चाहिए हैं. We have to ask this kind of question. So जाए पूछो सुहागणी वाहे किनी बाती सह पाइए. So there's 3 things in this pauri that we need to achieve. गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु के दरबार विच हाज़र बैठी हुई संगत, आओ पहला गुरु की दिती हुई दात गुरु की फतेह की सांझ पाइए. हाथ जोड़ के गज वज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. With Guru Sahib's kirpa, we are all gathered here today in the darbar of Guru Granth Sahib ji in their weekly diwan, listening to kirtan and attending katha diwans as well. So Gurbani says Satsangat Sadgur Chatsal hai jit har gun sikha. That the true Sangat, Satsangat, Satgur Chatsal hai is a school of the true Guru. Te is school de vich sikhਣ ki aunde ha. We have come here jit har gun sikha. We have come here to learn about Paramatma. We have come here to learn about the virtues of Vaheguru. ते संगत विच आउण दा सानू लाभ की आ. Why do we even come into संगत? We are here to remind ourselves daily कि our purpose of coming into this world, साडा जरा मकसद आ दुनिया ते आउण दा ओ की आ. असीं अपने आप नू याद दिलाउने आ ते रोज बाणी विच पढ़दे भी आ भई प्राप्त मानव दे हो रिया गोबिंद मिल की एह तेरी बरिया. सानू याद हुंदा है, we remember कि our purpose क्या पर असीं फिर भी रोज भुल जाने हैं. The day we were born, Guru Sahib tells us कि ए जन्म वड पुण्य पाया देह सो कंचन चंगड़ियां मानस जन्म वड पुण्य पाया. That through great fortune we have gotten this human birth. देह सो कंचन चंगड़ियां, this body that we've got is even more priceless than gold and jewelries. And ਇਹਦਾ purpose ਕੀ ਆ कि परमात्मा दे नाल मिलाप करना है तू हुण. That you're supposed to unite back with Vaheguru. And we read this Gurbani Pankti as well. Sabna sahre vanjana sab mukla banhar. Sabna sahre vanjana. ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ? What's the meaning of this Pankti? Sabna, everybody, sahre vanjana. Everyone sitting here, man, woman, bache, anyone, sahare banjana. We are going to go to our in-laws. Assi apne sahre de ghar jana hai. Sab mukla banhar. So jede buzurg honge, you will know this practice, this ritual of muklava. So muklava is a practice in Punjab de vich hun tak ghatt hi hunda a, where from a very young age jadon ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ at very young age, 10, 11, 12 ਸਾਲ ਤੇ. At that point they are not able to start a grihasthi jeevan on their own. So आनंद काज करके the boy still goes back to his family and the girl goes back to her family. So फिर मुकलावा उदों ਹੁੰਦਾ ਆ when the girl and the boy are already of age, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 19, 20 ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ independent ਹੋ ਗਏ. That's when the boy's family comes again to the girl's family, to the house, and they do a rasam to bring the girl back to her in-laws, and that is called muklava.
सो जो इस देखिए गुरु साहब सानू कहते हैं सबना सौरे वंजना कि असी भी आए हैं इस दुनिया ते दिस इज आवर पेरेंटल होम साडा मापियो दा घर है दुनिया पर इट मीन्स कि ये टेंपररी आ सब मुकलावनहार मतलब महाराज ने सानू भेजिया टेंपररी स्टे वास्ते पर नो कि एक दिन मुकलावा आना है भी असी परमात्मा दे नाल जाना है परमात्मा नाल एक मिक होना है एंड इन गुरबाणी जैसे गुरबाणी पढ़ते हैं तो वो गुरबाणी इज रिटन इन फेमिनिन वॉइस मतलब कि असी सारे जेडे जीव आत्मा इत्थे बैठे हैं व्हेन आई से जीव आत्मा आत्मा इज बेसिकली द पावर हाउस दैट्स रनिंग दिस जीव एंड जेडे असी जीव आत्मा इत्थे बैठे हैं वी आर द सोल ब्राइड सुहागण कह लो ऑफ अकाल पुरख वाहिगुरु सो जो बाणी कहती है इस युग में पुरख एक है इस जग में पुरख एक है होर सगली नार सबाई इस जग दे विच पुरख मींस हस्बैंड इज ओनली वन होर सगली एंड एवरीवन एल्स दैट यू सी मैन वुमन बच्चे हूएवर नार सबाई सो अज दा जिहड़ा विषय आ वी गोना टॉक अबाउट कि असी ओ सुहागण किदां बनना है A wife is celebrated, a woman is celebrated when she's of age if she's happy with her husband. She looks good standing next to her husband. And that relationship, that house is happy, is peaceful if the husband is happy with the wife and the wife is happy with the husband. And we're going to look at that rishta between us and Vaheguru ji. हालांकि as a woman, physical तौर पे परमात्मा ने सानू woman बनाया, स्त्री बनाया. It's easier for us to understand Gurbani and relate to Guru Sahib. But for men, it might be a bit different. You have to first switch your mentality from a man's perspective to a feminine perspective, then connect to Guru Sahib as well. So, when in Gurbani, Guru Nanak Dev Ji Maharaj ये बाणी भी लिख देने. When they meet this magician, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ they meet a magician called ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ and that place called ਕਾਮਰੂਪ ਉੱਥੇ ਬਸ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ is the only female magicians ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ goes there and Noor Shah tries her very best to capture Guru Nanak Dev Ji Bhai Mardana ji ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਚਲੋ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ took her powers away and at that point Guru Nanak Dev Ji Noor Shah is asking कि सच्चे पातशाह I'm lost I thought कि I was great but you have proven me wrong. At that point, Guru Nanak Dev Ji recited this Bani called Kuchaji. So in Guru Granth Sahib Ji, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਚਜੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸੁਚਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਮੰਤੀ these three shabads are very short they're very very short shabad even if you add them into your nitnem 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ to read just one ਸੁਚਜੀ ਕੁਚਜੀ and ਗੁਰਮੰਤੀ and even the process of it Guru Sahib ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਚਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਚੱਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਚੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ so ਕੁਚਜੀ means someone who is not ਚੱਜ who is ungraceful doesn't know anything ਫਿਰ ਕੁਚਜੀ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਚਜੀ means ਜਿਹਨੂੰ ਢੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਚੱਜ ਵਾਲੀ ਆ who has virtues, graceful. ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰੁਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ then adds on to ਗੁਣਵੰਤੀ means ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲੇ ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਬਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਇਨ ਕੁਚਜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੇ ਕੁਚਜੀ ਅਮਾਵਲ ਡੋਸਰੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਸੋਹਰਾਵਣ ਜਾਓ ਜੀਓ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕੁਚਜੀ ਅਮਾਵਲ ਡੋਸਰੇ
डोसरे दा शब्द, look at the language that Guru Sahib is using here. कि मेरे विच में कुचज्जी है, and I have so many faults in me, demerits in me. How I क्यों सो रावण जाओ जियो. Now in Gurbani, when we hear the word क्यों, उदा आम पंजाबी बोली विच क्यों दा मतलब why हुंदा है ना, पर गुरबानी दे विच when the शब्द क्यों comes, most of the time it means how. How क्यों सो रावण जाओ जियो. I mean, how can I make, Sah means husband, Kanta, Sah, Purkha, Pursha, A artha Gurbani de matlab husband. How kyo sho ravan jao jiyo, how can I enjoy my husband, my Vaheguru. Ikkudu ik chadandiya means, when I look at each one of you here, chadandiya means you're even better than me. That person is 10 times better than you, 100 times better than me. कौन जाने मेरा नाम जियो, who knows me, मैंने कौन जानता है परमात्मा. जिनी सखी सोहराव्य से अम्बी शावड़िए जियो. जिनी सखी, look at that. Because we are all suhagan, brides of Paramatma, अपना आपस में रिश्ता किया. What is the relationship between me and you, between me and you? जिनी सखी, सखी दा मतलब friend, दोस्त. जिनी सखी सोहराव्य. And if you look at the relationship of a friend, आजकल दी जेरी friendship हुंदी है, it's much more मतलबी, है ना, कि अपने ही सुख से सब लागे क्या दारा क्या मी, वही रिश्ता हो गया. वो फ्रेंडशिप नहीं, दिस इज सौदाशिप, where you make some kind of deal, you make me happy, I make you happy. पर जेरी सखी होंदी है, the true friendship is when I look at you, I must be inspired. थोड़े ना गल्ला करके I must be inspired. I want to become like you, even better than you. And if I see someone better than me, I would say, look at that, look at their virtues. सांझ करीजे गुण है केरी, छोड़ अवगण चलिए. That is friendship. जिन्हीं सखी सोहराव्या, Guru Sahib says, those who have enjoyed Paramatma, who have become those beautiful soul brides, उन्होंने virtue किया. How are they living in this world? Say अंबी शावड़िए जियो. अंबी दा मतलब अंब दा जरा बूटा नहीं होता, the tree, a mango tree. जदों एंड अतरी धुप होंदी है ना, we are going through heat wave in Malaysia. So इत्थे इन्नी अतरी गर्मी है इत्थे, and you feel like चलो होने एक कौन सारे को हैगा या पक्खा दा प्रबंध सारे कुछ हैगा, but at that time people used to find the shelter of a tree. Even Gurbani says, Mata Khivi नेक जन जिस बहुती शाव पत्राली. Mata Khivi ji was one of the महल of Guru Sahib mentioned in Gurbani. What's her nature like? Jis Bhauti Shao Patrali. Even Pai Satta, Pai Balwandaji says that her nature is so calm and soothing like a tree. Vi jera koi aunda ya jadon sangat karda ya, they too feel the same energy as well. That's how you know कि this person is a good sangat. When you feel that kind of positivity as well. Just बारों पे खतार के बाना पाके what, but when you do their sangat and there's a lot of negativity, a lot of, you know, feeling demotivated, feeling guilty, self guilt, then ओ संगत नहीं. पावे बारों पे उदासी दा होवे, ओ संगत नहीं. So मारा ए बाणी दे विच कुचज्जी दे बाणी दे विच मार दस दिने कि मंदर मिट्टी संदरे पत्थर कीते राज जियो, तैसे नाल मोतियों से दुखा कूतर याज जियो. Guru Sahib says कि this Kuchaji, someone who is disgraceful, not a beautiful soul bride, सुहागन निधि, एदे गुण की ने, गुण नहीं, अवगुण की ने. मंदर मिट्टी संदरे पत्थर कीते राज जियो, मतलब जेरे दात परमात्मा ने बख्शे ने, the virtues, the gift that Guru Sahib has given, the wife is only attached to those things. So Guru Sahib says that this is not a soul bride, this is not a suhagan whose relationship with the husband is only based on physical gift. So husband बस $10,000 दे ही जावे, महीने दा सोना दे ही जावे, only then the wife is happy. But there's no spiritual connection there. वो रिश्ता फिर रहंदा नहीं. And Guru Sahib says the same here as well. So in the end of this Bani, Kuchaji Bani, सब राती सोहागणी, मैं दुहागण काई रात जियो. So Guru Sahib is doing a बेनती, तुद गुण मैं सब अवगुणा, एक नानक की अरदास जियो.
ਵੀ ਤੁਧ ਗੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਭ ਅਵਗੁਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ। ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਾਈ ਰਾਤ ਜੀ, ਕਿ ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਹਾਗਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, means with all these brides, these other jeev atmas that I'm seeing here, you love them so much, you spend your day and night with them. मैं दोहागन is someone who's not a beautiful soul bride, not a happy soul bride. काई रात जी, मैनू एक रात दे दो, spend a bit of time with me, teach me how to become सुहागन। So now इत्थे सवाल आउंदा आ भी ਅਸੀਂ सुहागन किदां ਬਣੀਏ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ सोचण वाली गल is, चलो इस्त्रियां वास्ते it's easier, we can connect very much to it, but सारे ਉੱਪਰ एक गल टुकदी है भी ਅਸੀਂ परमात्मा ਨੂੰ खुश किदां करना आ। भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਊ ਵੀ we don't want परमात्मा to ask us ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ, मैं जी नामा ओ जी। We don't want परमात्मा to ask us कि दरवाजे ते कौन बैठा है। We want to do so much भक्ति कि even if we have to go to धर्मराज कशहरी, गुरु साहब आप कहते ने ये मेरा आ, एदा कोई लेखा जोखा है नहीं, एक कोई लाइन ते नहीं खड़न वाला जा खड़न वाली, ये साडा ही आ। इन्ना दा एडा रिश्ता होना चाहिए साडा गुरु साहब दे नाल। सो इत्थे सवाल आउंदा आ, सब राती सुहागणी, असी सुहागण किदां बणीए। सो दिस हाउ व्हेन वी रीड गुरबाणी, इस तरह के सवाल पूछे चाहिए हैं। वी हैव टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि गुरु साहब से सुहागण वे, हाउ डू आई बिकम अ सुहागण। आई नहीं सवाल पूछीदा हुंदा कि रागमाला बाणी आ, भगतां दी बाणी बाणी आ, मूल मंत्र कित्थों तक। These are very superficial questions. These are the questions people ask who are not spiritual, who are not interested in seeking spiritual knowledge. If you are a spiritual seeker, the kind of question you must ask is, what kind of virtues must I have within me to make Paramatma happy? What must I do to make Vaheguru happy? What do I do to become one with God? क्योंकि एक जन्म तुम्हारे लिखे, nobody wants to come back after this जन्म। किसी ने आना नहीं वापस इत्थे, है ना? क्यों दुनिया दुख नाल भरी हुई आ, किने वापस आना है, होर दुख देखने आ, होर मोह दे विच फसना। सो सवाल हुंदा आ कि सुहागण किदां बणीए। सो इत्थे गुरु साहब शब्द हजारे दे विच महाराज यही सवाल पाउंदे ने, जाए पुछो सुहागणी वाहे किनी बाती सह पाई है। सवाल आउंदा है ना, जाए पुछो सुहागणी। सो हियर जदों असीं डॉक्टर बनना हुंदा आ, व्हेन यू वांट टू बिकम अ लॉयर, एन इंजीनियर, अ डॉक्टर, पढ़ाई तो करते ही हैं, but we go and ask people who have experience, who have studied medicine, who have studied law, उन्होंने पहला पूछते हैं, वीर जी भैन जी, how is the study like? औखा है? What do I need to do? Any tips? You know, how can I pass my exams? What must I do when I start my work? Or you read the life stories of those who have achieved, who are successful people, उन्होंने दी stories ही पढ़ते हैं। इत्थे गुरु साहब कहते हैं ओही गल होई है, जाए पुछो सुहागणी। हुण उन्हां नूं जाके पुछो ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਤੀ ਕਿਹੜੇ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, what did you do that you have become one with ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਸੋ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ only a ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ can recognize another ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। So someone duhagan like me, how am I going to know who is a suhagan? ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ। So now even it's so sad that we are even questioning our history as well. इतिहास क्यों जरूरी है? Why is इतिहास history so important? क्यों जे गुरबाणी सानू थियोरी दस दिया भी आए करना ये नहीं करना। How do we know whether this has been a success or not? Of course गुरबाणी is 100% success rate, but how do we know? क्यों माइना चलाकियां करदा, the mind asks question, the mind has चलाकियां। So how do we know whether this is success? Is when we look at इतिहास। बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करें,
The stories of those Gursikh stories of Guru Putt to, from just a son, saput kare, you become a good son, a good child. So jai puchu suhagni vahe kini bati sahpaiye. So there's 3 things in this paudi that we need to achieve. Number 1, jo kich kare so pala kar maniye, hikmat hukm chkaiye. A pehli gal, which is jo kich kare. So jera kuch parmatma karda ya, so pala kar maniye. Pala means to accept whatever Paramatma is doing, worth doing, or is going to do is good. Hikmat hukam chukai, jeri apni mat onu tyag na karo, which is a very difficult thing to do, because we have been blessed with something called the mind, and within the mind we have something called the buddhi, intellect, which means that we can reason, we ask question, we decide, we do kintu parantu. How can we give up all of this? Not possible. Then asa diwar de vich mara kehte ne hukam maniye hove parwan ta. So this is a condition. Hukam maniye, if you accept hukam, hove parwan means you accepted. Ta, only then. Khasme ka mahal paisi. Khasam, again another word for husband. खसमे का महल पाइसी, खसमे पावे सो करे. So खसमे पावे जरा खसम नु पौंदा या whatever परमात्मा likes, Guru Sahib likes, makes them happy, so करे. मनो चिंदियां सो फल पाइसी. So as long as परमात्मा is happy with us, मनो चिंदियां से जेरे साडे मन दे इच्छा सो फल पाइसी, we get whatever we wish for. ता दरगह पैदा जायसी. ता अगेन दरगह वे सचखंड वसे निरंकार पैदा जायसी. जस्ट लाइक हाउ राजा जनक इन्नी भक्ति करके अपनी जिंदगी दे विच विद चैरियट आप जेरे जमदूत हो तां नेड़े जा भी नहीं सकदे सीगे. जम लज्जाए कर भागा, जेरे असीं पढ़दे आ ना बाणी च, जम लज्जाए में शर्म दे करके जेरे जमदूत भज गए भी इन्ना गुरसिखां दे कोल असीं आ ही नहीं सकदे. Raja Janak Muni, in the chariot, they are being brought straight to Sachkhand, and as they are passing by Sachkhand, they hear cries and screams. And puchde ne bhi, "Aa kaun chikka marya? Who is screaming? Who is crying? I can't hear dukh of people. Maitho suniya nahi janda, dasso kitthon aa rahi awaaz?" And they say ki, "Raja ji, as you are passing by, going over hell, Narak, and all these people who have done papa, they have to pay over the karma of their sins." And Raja Janak says, "Ki what should I do? What can I do to save all of them?" Parupkar. Jere Gursikh hunde ne parupkari hunde ne. They can't see the dukh of anyone else. They ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ जे तुसी दे सकते हैं, एक घड़ी means 24 minutes. 24 minutes of his whole life, किन्ने घंटे, किन्ने दिन, किन्ने साल भक्ति कीती. And Tarora says एक घड़ी of your bhakti can empty the whole of Narak. And imagine if you spend your whole life doing bhakti, how much virtues, how much punya you have within you. And that's why Gurbani says na कि सब कुल उदाहरण हार आप तरे सगले कुल तारे. क्यों गुरु साहब इदा कहते हैं? क्यों असी आप इन्नी भक्ति करके असी परोपकार हो जाने हैं. We become परोपकारी, that with us we save our whole family. 21 कुल 21 lineage generation of our family. तुसी परोपकार करना है, then do this परोपकार, save your whole lineage. सो जाए पुछो सुहागणी वाहे किनी बाती सो पाइए, जो किच करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाइए. सिखां दी भगत माला which is a Granth written by Shaheed Bhai Mani Singh ji, and they do khulasa, they explain and tell stories of Gursikhs which were mentioned by Bhai Gurdas ji in their vara. Sikhan di nama wali means like Gursikhs of the time of Guru Nanak Dev ji, Guru Angad Dev ji, right after Guru Hargobind Sahib ji. Te us naam
नाम दे विच एक सिख दा नाम जिक्र आउंदा आ, भाई मूला कीर, द सिख ऑफ गुरु नानक देव जी। सो भाई मूला कीर आंदे ने गुरु नानक देव जी पास, दर्शन करते ने एंड दे आस्क कि सच्चे पातशाह, देयर इज अ बिट ऑफ कन्वर्सेशन, ते गुरु साहब पूछते ने कि गिव अस अ बचन। सो ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਟੀਚਿੰਗ, ਅ ਬਚਨ that we can apply in our life। एंड गुरु साहब गुरबाणी से एक शब्द मेरे प्राण बसते बौर जन्म ना आवा, एक शब्द। You want your life to be saved, you want to be saved from this world, एक शब्द लेके ना अपने हिरदे च बसा लो ते ओही रट्टा लाई जाओ लाई जाओ लाई जाओ, बौर जन्म ना आवा, फिर तुसी वापस नहीं आना, you won't come back। एक शब्द। सो एक बचन भाई मूला जी कहते गुरु साहब नूं भी बचन बख्शो, एंड गुरु साहब बचन वाज कि जेड़ा भी सिख आवे, दिन आवे, दिन दे विच आवे, रात नूं आवे, केड़े टाइम ते भी आवे, केड़ा भी सिख होवे, यू हैव टू सर्व हिम और हर, ओदी सेवा करनी, सिख दी सेवा करनी है, लोच के सेवा करनी है, गुरु नूं समझ के सिख दी सेवा करनी है। ते ए बचन महाराज ने भाई मूला कीर नूं बख्शिया। मूला कीर गोज बैक होम ते उदां ही सेवा की, जो भी एनीवन इवन पासेस बाय हिज हाउस, वो अंदर सद के पहला सेवा कर, लंगर पानी छकाउंदे ने, इफ ही नीड्स टू स्टे ओ व्हाटएवर, एंड देन फिर सेवा करके तोड़दे ने। एक दिन एक सिख आया, भेख सी, उदासियां दा भेख पाया, सिखां दा भेख पाया होया सीगा, एंड ही कम्स टू द हाउस ऑफ भाई मूला कीर एंड कहंदा है कि आई एम अ सिख, एंड ही वाज रीडिंग गुरबाणी, मुखों गुरबाणी जबानी पढ़ी जांदा सी, भेख भी सिखां दा, गुरु दी बाणी पढ़ रहा, सिख ही हो। ते भाई मूला कीर इनवाइटेड हिम टू द हाउस एंड डिड हिज सेवा, लंगर पानी छकाया, रात दा वेला आया, इट वाज नाइट टाइम, एंड भाई मूला कीर सेंट हिम टू रेस्ट इन हिज रूम। जेरी भाई साहब दी पत्नी सी, शी हैड अ लॉट हीरे जवारात गहने सी ओदे, रात नूं की करदे, सोण तो पहला सारे गहने कांटे कोटे हार हुर ला के डब्बे च पा के बारी च रख दिंदे ने, दत्त जोरी च ते किथे भी संभाल के रख दिंदे ने। एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आल्सो गोस टू रेस्ट फॉर द नाइट। दिस गाय, सो कॉल्ड सिख, ही गेट्स अप, उठ के मूला कीर दे कमरे च जाके उस बारी दे विच जिहड़े हीरे जवाहरात पए सीगे, ਉਹ डब्बा कढ के घर दे बाहर जाण लगा। सो सीगा बाहरों लगदा सी सिख, पर अंदरों सीगा ठग। He was a ठग, a robber who would disguise himself as a Sikh because he knew what kind of person Bhai Mullah Keer was. कि गुरु साहब दा बचन कमाउंदा आ, he was listening and following the बचन of Guru Sahib, so it was easy to fool him। दुनिया ते भी हुण आए कर बहुत सौखा आ, very easy। Sometimes we question ourselves कि मैं सिक्खी कमाउणी आ, सिक्खी कमाउणा आ, अमृत छकिया होया, but why is the world treating me like I'm useless? Why are people mistreating me? Why are people taking advantage of me? And I can't even do anything because I am a Sikh of the Guru, and Guru Sahib say कि सारे दा सत्कार करना है, संगत करनी है, सेवा करनी है, भावें लोकी गाला कड्डण, take advantage of you। But this is how Guru Sahib then blesses us back again। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, the gate was locked, and now he says how can I, he's thinking कि how can I leave this house। he goes back to the house, ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। he goes back into the room, wakes Mullah Keer up, ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਸੀ ਕੱਚ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨੀ ਸੇਵਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਫॉर ਅ ਵਾਕ। ਐਂਡ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕੀਰ ਸੇਜ਼ ਇਟਸ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਇਟਸ ਡੇਂਜਰਸ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਲਓ, whatever you want to do। he says ਨਹੀਂ, give me the key to the lock, I want to go out। ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕੀਰ ਸੇਜ਼ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, let me open the gate for you। ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕੀਰ goes and open the gate, and ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਸੀ ਕੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। the jewelry box fell right in front of Bhai Mullah Keer and it opened,
And what ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਕੀ sees ਕਿ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜ਼ਵਾਰਾਤ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ what does ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਕੀ does? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਕਮਤ ਆਪਣੀ ਮਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ what ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਕੀ did was he put all the jewelries back in the box, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾਤਾ, gave it in his hand, and this thugger did not even say anything, ਬਸ ਨੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। He ran off. ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਕੀ's wife gets up and she realizes that her box is missing. Now she asks her husband, Ki, did you see anything? What about the person who came? Maybe he saw something, maybe he took it. The wife was making all this assumption. ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਠੱਗ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਚੱਕੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਜ ਸੀ, ਦੀ honor of ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ was in question ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ। ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਕੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਗਹਿਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਗਹਿਣੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। So that the wife keeps quiet. Nobody knows about this. When Bhai Mulla Kir goes and make Guru Nanak Dev Ji and Guru Sahib ne kuch nahi kiya, we aaj jatauna nahi, fir bhi assi jadon kuch karde assi jataune a, we tell everybody ki main kita aya, mere varga koi hai nahi, dekho main Guru da bachan kamaya. He doesn't tell Guru Sahib, and Guru Sahib ne aap apne mukh kiya ki tu Guru di te Guru de baane di, Guru di ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਆ। ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਕੀ you protected the honor of the Guru, the Guru's ਬਾਣਾ and the Guru's ਬਾਣੀ, so that no one could even lift their finger and question Guru Sahib। ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇਗਾ, like Guru Sahib will protect your honor। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਇਦਾਂ ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ just by this ਬਚਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰ ਮਨੇ, ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚਕਾਈਏ, ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮਨ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਦੁੱਖ as ਭਲਾ? ਹਾਊ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ as ਭਲਾ? ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਸਿੱਖੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ 10 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, 5 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। Is Guru Sahib even listening? Of course Guru Sahib is listening. 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ how can ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸਮਾਏ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 21 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਤੁਰਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ they are each other, ਇੱਕ ਅਸਪਦੀ ਦੂਜੀ ਅਸਪਦੀ, ਇੱਕ ਅਸਪਦੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਅਸਪਦੀ ਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਏ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾ from ਪਹਿਲੀ until 24th ਸ਼ਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ conversation 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ। and our ਨੌਜਵਾਨ, are we having that kind of conversation? ਸੋਚ the level of where we are supposed to reach. This 12 saal kid is asking me, how can home dirgh rog hai? How can home become a rog, a disease? But then Guru Sahib says, daru pee ismaye ki daru bhi ehde vich hai ya? A 12-year-old child is asking this question. It got me thinking ki number 1, this child is asking me this question. Ki number 2, how am I going to explain कि होमे रोग या होमे दे विच सानू सारे डिजीज होंदे, because home is what? Home is identifying that I am this body, I am this identity, and there's no one else apart from me, there's no one like me. Home ya,
And when we recognize ourselves with this body, with this identity, with this mind, फिर दुख होना ही है. दुख आउंदे कित्थों आ? Mental दुख, when we speak about it, when we attach ourselves to the world, to our family, बच्चे, friends, social media, whatever it is, when you attach ourselves to these things, what happens when you attach ourselves to something? There's a form of expectation. भी मैनू इन्ने followers होण मैं खुश हो जाना है. Or if these many people like my stories, I think I'm happy. And if it doesn't happen, why it didn't happen? What's wrong? Is it in me? Did somebody say bad about me? Expectations are not met. ख्याल ते ख्याल बुरे ख्याल आए जांदे ने, and you become दुखी. Then you start seeing negativity all around you. दुख ही पैदा होना है. पर दारू पी समाए फिर गुरु साहब कहंदे ने क्यों? Because दुख दारू हुंदा है. ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ, which is to ਪਰਮਾਤਮਾ. ਉਹ ਦਾਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ. So first one, to accept hukum. Second one, जाके प्रेम पदार्थ पाइए तो चरनी चितलाइए. प्रेम पदार्थ, you must have immense love for Guru Sahib that ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ. प्रेम पदार्थ, there are 9 types of bhakti, where you have listening to kirtan, you have doing kirtan, seva of your guru, becoming a friend with your guru. Ek bhakti ne. But none of this can happen if you do not have something called love. A mother will never bother to protect their child if there is no something called love. So that's why Guru Sahib कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए. जिन्होंने प्रेम किया या only they have found God. Because why? Only in love. When we say that we are mad in love, it's true. Because only in love we become bora, we become mad, we become crazy. Mere baba main bora, sab khalq siyani main bora. It's good. People call you crazy in love with Vaheguru. And in love you become so barak, so detached from the world, you don't care what the world says. As long as my guru is happy. दुनिया ने पाउंदा ना पाउंदा मैं परवाह नहीं. गुरु साहब खुश होण आपे सारा कुछ संभाली जाऊंगा. जाके प्रेम पदार्थ पाइए. And you want to learn the best love story? No need to look at Laila Majnu, he Ranja and Romeo Juliet. Oh, temporary. You want to look at the best love story? You should read the love story between Guru Angad Dev Ji and Guru Nanak Dev Ji. Full stop. Nothing greater than that love story. Guru Angad Dev Ji writes a salok for Guru Nanak Dev Ji, says जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना. जिस प्यारे स्यो ने हो, with the pyara that you love so much, this आगे मर चलिए. What kind of relationship you have? मर चलिए. Give yourself completely to your Guru and let your Guru handle everything for you. जाके प्रेम पदार्थ पाइए तो चरनी चितलाए. Second, प्रेम पदार्थ, प्रेम, love. तो चरनी चितलाए. But the prayer that you get from Vaheguru, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆ. What you need to do is you must come to the charan of Sadguru Ji. Now ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥਾ, the same ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ. After this the ਸਾਖੀ of ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. And they ask ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ you always say ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ. You know what does it mean? Where is Guru's charan? Sanctuary ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ सत संगत विच मेरे चरण ने. The Gur Sharan, Guru di charan sangat hundi hai. So come into the sangat and you'll be sitting in my charan. Sangat vich beh ke tusi mere charan di niggi gol manoge. So you have to come into sangat. So to charni chitlaiye. Attach yourself to Guru Sahib. Chitlaiye. Chit means your conscious, your dhyan must be in your Guru. Every day you must live. सवाल होता है ना, we are so busy with life, how can we practice Sikhi? Our mindset is wrong. Sikhi must not evolve around our life. Our life must evolve around Sikhi, then our life becomes easier. And you must have seen how Sikhi has been so practical during COVID. Hath suche karne, muh takna, suchamta rakhni. Why do we not hug when we say Fateh? ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ because we have never practically lived it.
So second one is praying and first one हुक्म मनना. Third one सो कहे सो कीजिए तन मनो दीजिए ऐसा परमल लाइए. परमल means सुगंधी, perfume. असी perfume लाਉਂਦੇ क्यों आ? To feel good, to smell good, to attract good vibes around us, to give out good vibes. तो परमल लाइए. सो कहे means whatever परमात्मा से सो कीजिए तन मनो दीजिए. You have to give your mind, your body, your wealth, everything to your guru. ऐसा परमल लाइए. And look at the life of Mata Sahib Devan ji as a wife, a mahal of Guru Gobind Singh ji, and she couldn't leave Guru Sahib. क्यों रोज गुरु साहब दर्शन के बिना माता जी ने लंगर छकना नहीं. They wouldn't have prashada without having darshan of Guru Gobind Singh ji. And yet when they were in Hazur Sahib, and Guru Sahib knew कि बस होना ज्योति जोदा समा आ गया, and Mata Sahib Devan ji would not be able to handle that separation because patni si. They were Jot Sarup, but they were still physical तौर पे a wife of Guru Gobind Singh ji, very much attached to the Guru. And Guru Sahib did hukam to her and said, you have to go back to Delhi. And with Mata Sundari ji, take care of the pantha. Panth की संभाल ना करो, पंथ ਨੂੰ आगे ਵਧਾਓ. And Mata Sahib Devan ji then does beti ki sache Pacha, you know my condition is I will not have langar without your darshan. So how can I have your darshan? And us vele Guru Sahib ne 5 shastar Mata ji nu bakshe. 5 shastar they blessed Mata Sahib Devan ji and said कि इस शस्त्र दे दर्शन करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ. ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹਿਨ ਪੇ ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣੇ ਸੋਏ ਖਾਲਸ ਦੇ. ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ. ਵਿਦਿਆ has given everything up to the Guru. प्रभ में है विदिन परमात्मा, मोह में बिटवीन द गुरु, तास में within the Sikh, ranchak nahin ped. There is no difference between the Guru, Paramatma and the Sikh. So 3 hukam manna, pray and to give yourself completely up to the Guru. सो कहे सो कीजिए तन मनो दीजिए ऐसा परमल लाइए. एव कहे सुहागणी भैणे. So this is the answer. एव इदा कहे सुहागणी भैणे इनी बाती सह पाइए. इन्ना गल्लां दे नाल परमात्मा दी प्राप्ति होंदी है. इन्ना गल्लां दे नाल. So हुण सानू पता लग गया, but हुण what are we going to do about it? असी अमल किदां करना है? So समा समाप्त हो गया संगत जी. विचार करदे आ, संगत विच विचरदे आ, साडे कोल बेअंत ही भुल्लां हो गया ने. संगत बख्शनहार. You can forgive. You have so much of power in you कि even Guru Sahib can't even say no to the Sangat who does a collective ardas together. So there's so much of power in Sangat when we are all together. So इतनी क बेनतियां परवान करनी, भुला चुका निखिमा गज बज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह.